ह्यूम पार्ट 4 के शुरू में आर्ग्यू करता है दैट ऑल नॉलेज डीजनरेट्स इनटू प्रोबेबिलिटी ड्यू टू द पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। और वो कहता है इवन मैथमेटिक्स जैसे सॉलिड सब्जेक्ट की जो सर्टेनिटी है वो भी लेस सर्टेन बन जाती है जब हमें रियलाइज़ होता है कि वी माइट हैव मेड अ मिस्टेक समवेयर। बट थिंग्स गेट वर्स। ह्यूम कहता है कि हम जब इस फैक्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, जब हम अपने दिमाग की फॉलिबिलिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं और हम मेटा रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन दिस फर्स्ट फैक्ट, ऑन द फॉलिबिलिटी ऑफ दिस फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड सो ऑन एड इन्फिनिटम, हम प्रोबेबिलिटी को अल्टीमेटली रिड्यूस कर देते हैं इनटू टोटल स्केप्टिसिज्म, और एटलीस्ट इट वुड इफ़ आवर बिलीव्स वर गवर्नड बाय द अंडरस्टैंडिंग अलोन। लेकिन ह्यूम के मुताबिक ये जो एक्सटिंक्शन ऑफ बिलीफ है ये एक्चुअली होती नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि हैविंग बिलीव्स हमारी नेचर का पार्ट है, एंड दिस ओनली कन्फर्म्स हिज अकाउंट ऑफ बिलीफ एज मोर प्रॉपरली एन एक्ट ऑफ द सेंसिटिव रादर देन ऑफ द कॉग्निटिव पार्ट ऑफ द नेचर। और हम टोटल स्केप्टिसिज्म के अंदर क्यों सिंक इन नहीं कर जाते, वो इसलिए कि हमारे दिमाग की एक लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फोर्स एंड एक्टिविटी और हमारे लिए जो डिफ़िकल्ट और एब्स्ट्रूज रीजनिंग है वो स्ट्रेन करती है हमारी इमेजिनेशन के ऊपर, वो हिंडर करती है हमारे रेगुलर प्रोसेसेस ऑफ द पैशंस एंड सेंटिमेंट्स, जिसकी वजह से एक्सट्रीमली सटल स्केप्टिकल डिफ़िकल्ट आर्गूमेंटेशन मुश्किल से बड़ी हमें ओवर पार कर सकती है और काफ़ी कम चांस है कि वो हमारी बिलीव्स को डिस्ट्रॉय कर पाए। ह्यूम कहता है इन ऑल डेमोन्स्ट्रेटिव साइंसेस द रूल्स आर सर्टेन एंड इनफॉलिबल, बट व्हेन वी अप्लाई देम our fallible, solid, uncertain faculties are very apt to depart from them and fall into error. We must therefore, in every reasoning, form a new judgment as a check or control on our first judgment or belief, and must enlarge our view to comprehend a kind of history of all the instances wherein our understanding has deceived us, compared with those wherein its testimony was just and true. Our reason must be considered as a kind of cause, of which truth is the natural effect, but such a one as by the eruption of other causes and by the inconstancy of our mental powers may frequently be prevented. By this means, all knowledge degenerates into probability, and this probability is greater or lesser according to our experience of the veracity or deceitfulness of our understanding and according to the simplicity or intricacy of the question. फिर ह्यूम एक लेंथी अकाउंट पेश करता है कि हम एक एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड में क्यों बिलीव करते हैं, और हम ये क्यों बिलीव करते हैं, हम ये क्यों सोचते हैं कि ऑब्जेक्ट्स के पास एक कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है, यानी दे एग्जिस्ट व्हेन अनऑब्जर्व्ड, और एक डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस है, यानी दे एग्जिस्ट एक्सटर्नल टू एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द माइंड। ह्यूम 3 पोटेंशियल सोर्सेज कंसिडर करता है ऑफ दिस बिलीफ: द सेंसेस, रीज़न एंड द इमेजिनेशन। वो कहते हैं कि सेंसेस नहीं हो सकते हमारे इस बिलीफ का कॉज कि ऑब्जेक्ट्स के पास एक कंटिन्यूड और डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस है, क्योंकि क्लियरली दे आर इनकेपेबल ऑफ इन्फॉर्मिंग अस ऑफ एनीथिंग एग्जिस्टिंग अनऑब्जर्व्ड। यानी अगर हम एक चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हम ये एक कप ऑफ वाटर को ऑब्जर्व नहीं कर रहे व्हेन वी आर नॉट अराउंड, तो ऑब्वियसली आवर सेंसेस कैन नॉट इन्फॉर्म अस कि द कप एग्जिस्ट्स और कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट व्हेन वी आर नॉट ऑब्जर्विंग इट। इसी तरह ह्यूम कहता है कि हमारी जो रीज़न है वो भी हमें कन्विंस नहीं कर सकती है कि ऑब्जेक्ट्स के पास एक कंटिन्यूड और डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस है, क्योंकि इवन चिल्ड्रन एंड फूल्स बिलीव इन एन एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड नियरली ऑल ऑफ अस नाइवली टेक आवर परसेप्शंस टू बी ऑब्जेक्ट्स विद अ कंटिन्यूड एंड डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस व्हिच गोज अगेंस्ट रीजन। तो हमारे पास एक ही सोर्स बचता है कि ये जो बिलीफ है कि ऑब्जेक्ट्स हैव अ कंटिन्यूड एंड डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस, दैट देयर एग्जिस्ट्स अ फिजिकल एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये बिलीफ आना चाहिए फ्रॉम द इमेजिनेशन। लास्टली ह्यूम कहता है कि सिर्फ कुछ इम्प्रेशंस इस बिलीफ का कॉज होती हैं, नेमली इम्प्रेशंस विद कॉन्स्टेंसी, यानी इनवेरिएबलेंस इन अपीयरेंस ओवर टाइम, और कोहेरेंस, विच इज़ रेगुलरिटी इन चेंजिंग अपीयरेंसेस।